startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. मैं पालो अल्टो द सेफेस्ट सिटी इन अमेरिका वहाँ मेरा बैग छिना है. वाओ, मार्क ज़करबर्ग के घर भी वहीं भाई डाउनटाउन में the next street from the police station. Wow. That's the funniest thing. I've always been a bad student. I used to hate numbers, languages. I could go on and on with that story. I was thrown out of the school at the age of 15 and a half, 16 because I wasn't doing well. We never took our data so seriously. And why our customer leaves us? If we've had 9,000 customers till now and we have maybe 300 active customers, why did that 8,700 customers leave us, and then where did they go? What ticket size were they? How can we regain them? From 2009 to 11, I was freelancing and I was making about $10,000-$12,000 a month. What I was mainly focusing on was कि जी मैं खूबसूरत लड़कियों को रखूं जो सेल्स का काम करें. Does that really matter though? Companies genuinely बहुत अच्छी हैं and you believe that you can help them. उनको खुद कॉल करो, उनके decision maker से बात करो. Try to get their direct phone numbers from different sources. Assalamu alaikum, my name is SaadAhmedAllahwala and welcome back to another podcast. Today we have a guest who we're recording for the second time, but who is very special again for the second time. He has been in the tech ecosystem for a while. His journey is amazing. I got to learn so much more about him yesterday on our first recording before our error. But today we have Noman Bhai. Noman Bhai is a founder. He has built a lot on his own. He's been through a lot of challenges, and we're going to talk more about his journey, his ideas, and he was suggesting some things about the podcast as well. So uske bare mein bhi dekh lenge. But Noman Bhai, thank you so much for coming. It's really an honor to have you for the second time, and for really believing in me कि जी आप दूसरी बार भी आए. एक बार तो हुआ था, एक बंदा गुस्सा हो गया वापसी नहीं आया क्योंकि मसला हो गया था. तो thank you. बंदा सही नहीं होगा. Thank you for having me on the show. I think let me reintroduce you all to the podcast. मैं हूँ आपका guest और ये है हमारे host SaadAhmedAllahwala. I have learned a lot of things from this guy in the last 2 days while I was coming for the podcast, जो कि shoot नहीं हो पाया. He is just 21 years old with so many gigs that he's doing simultaneously, and is also on the verge of an exit for one of his companies, which is phenomenal. लेकिन ये अपने आप को अंडरमाइन करते हैं. तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. साद, थैंक यू फॉर कमिंग. सवाल पूछें जनाब. तो Noman Bhai, we'll start off from your journey. So you told me about you starting off from a call center at the age of 16. Yeah. And how that happened. पहले उससे शुरू करते हैं. But where are you from? Are you from Karachi? Where were you born? How did that happen? Yes, I'm a hardcore Karachiite, born and bred and raised in Karachi. I've always been a bad student. I used to hate numbers, languages. I could go on and on with that story. I was thrown out of the school at the age of 15 and a half, 16 because I wasn't doing well. And I did my O-levels privately. And then we had financial constraints. तो मैं बोला यार क्या करें, पॉकेट में नहीं मिलती नहीं थी. So I said I'll just find a job. उस वक्त back in 2004-05 call centers emerge कर रहे थे. And technology was a new thing, and President Musharraf was in power, who was doing everything to promote IT services. तो नई कंपनीज आ रही थी. तो मैंने वहाँ से एक जॉब शुरू की. There was this lady, Faryalapa, she moved back from Canada, and she had 2 campaigns. I think एक duck cleaning था, एक Bell Canada था. And the only requirement for that job was as long as you can speak in English, that's fine, come on in, do your sales, make money. So that's how I started, because I wanted to make money for my own self, to be able to afford myself. मैं सिगरेट ये वो खर्चा पानी निकालने के लिए मुझे कम से कम उस वक्त भी 4-5 हज़ार रुपये चाहिए होते थे. उस वक्त पेप्सी कितने की थी? पेप्सी का पता नहीं. सिगरेट बेंसन एंड एजिस का एक पैकेट आता था, वो 70 रुपये का था, 60-70 का मिल जाता था. बेंसन सस्ता सिगरेट होता, महंगा सिगरेट होता? महंगा था.
तो सस्ता वाला सिगरेट कितने का होता था? गोल्ड लीफ आई थिंक 20 रुपये का पैकेट था। तो आज कितने का, 200 रुपये का होगा? नहीं, गोल्ड लीफ आज 500 रुपये का है, बेंसन 800-1000 का है, अब डैनियल इन्फ्लेशन के हिसाब से लगा लेंगे, उस वक्त इनको 5,000 रुपये चाहिए होते उस थे। वक्त मुझे 5,000 रुपये चाहिए होते थे। उस वक्त की एक और अमेजिंग स्टोरी है। देन आई केप्ट स्विचिंग जॉब्स। तो मैं एक दूसरी कंपनी में लगा जिसका नाम AMG एक्सेस था। इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट BPOs बैक देन इन पाकिस्तान। अच्छा नहीं, so the first job you did Yeah. was at the age of 16 and a half, 17, and the second was almost 17 and a half के Okay. आसपास, राइट। वो जॉब मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि the first job did not pay me anything because I couldn't sort of do any sales. So मैंने जॉब स्विच किया। स्विच इसलिए किया क्योंकि I felt that I'm not that kind of a salesperson who's able to sell something over the phone to a customer in Canada. Maybe I was very young, but it was a tremendous, amazing learning experience for me. So I moved my job from that call center to AMG Access. वहाँ आया तो वहाँ हमने non-voice work था initially, but then again eventually the client I was working with, Jim, उसके साथ वो शुरू हो गया है वॉइस वर्क। He said, Noman, you need to find these contacts from these sources and then you need to set up appointments for me to be able to close a sale. And I used to use multiple tools and sources to identify data. So LinkedIn नया आया था, but then we had access to Dun & Bradstreet, ZoomInfo, Hoovers, Jigsaw, Data.com, इस तरह के tools. And I used to scrape data from those tools and run email campaigns and phone calls on those numbers. To my surprise, 60% of the data was junk, and I was wasting a lot of time, maybe let's say 5-ish hours of my day in cleaning the database. और 3 घंटे में कॉल करता था। और मैनुअली सारा सफाई करनी होती थी पहले? मैनुअली सारा सफाई करनी थी। तो उस वक्त तो अच्छा, टेक्नोलॉजी, सो आपको कोडिंग वोडिंग नहीं आती थी ना? नहीं, कोडिंग मुझे आज भी नहीं आती, लेकिन उस वक्त कोडिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। So I had to do it manually. So that was a challenge because I was losing out on the capital, like the commission that I was supposed to make on those calls. So that's when I came up with the idea. I spoke to the Jim. I spoke to the guy, Jim, and I said, Jim, listen, there's a problem. ये डेटा जो तुम्हारे पास है, जो यहाँ से आ रहे ख़राब है, मेरा इतना टाइम जा रहा है, मेरे पैसे। Either you give me a fixed higher salary or let me manage this mess. मैं अपनी टीम डिप्लॉय करूँगा, डेटा क्लीन करूँगा, उस पर सेल करूँगा, अपॉइंटमेंट सेट करूँगा, यू गिव मी पर अपॉइंटमेंट, एंड आई डोंट वांट अ सैलरी। उस वक्त सैलरी मुझे आई थिंक 6,000 रुपये से स्टार्ट किया था। सॉरी, दिस इज 2005-ish, 6-ish आई थिंक। तो 6,000 रुपये से था और प्लस कमीशन बढ़ेगा। खैर एनीवे, हमने वो मॉडल स्टार्ट किया, वो सक्सेसफुल हो गया, एंड इवेंचुअली he stopped buying subscription of DNB, ZoomInfo, Hoovers, blah blah blah, and altogether his company saved around $70,000 to $80,000 a year. Wow. और हमने यहाँ पे टीम बिल्ड कर ली, और हमारी टीम ने उनको, मैंने जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, we used to supply him with data on healthcare practitioners, healthcare professionals, store managers of different franchises, maybe let's say Walmart, PetSmart, इस तरह की डील से। We used to do the customized research for him and give him the numbers along with the email addresses, और उस पर फिर सारा कैंपेन मैं रन करता था। तो within a span of 6 months we started doing well, और I was the only youngest employee in that company जिसको उस टाइम पे उस डिपार्टमेंट में 6,000 से सीधा 12,000 पे जंप किया, 100% सैलरी बढ़ गई। So that's how it started. And that's when I realized that the power of data is something that we can capitalize on, because the future of selling back then, what I could see is all about automation, using different tools, reaching out to the prospects with customized content and with the right kind of intelligence. Like intelligence से मतलब ये कि हमारे पास information उनकी up to date हो। For example, maybe let's say तुम्हें Microsoft से contract लेना है, and you know that Microsoft is already working with ABC company in India. Now you need intel कि ABC company India जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑन ग्राउंड टीम है उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। These are the kind of intent
इंटेंट बेस्ड इंटेलिजेंस दैट वी यूज्ड टू एक्वायर फॉर आवर कस्टमर्स, और फिर हम सेल करने की कोशिश करते हैं. तो दैट्स अ विन विन सिचुएशन. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. इवेंचुअली 2011 में, इस बीच में मैं यूनिवर्सिटी भी गया, और मैंने यूनिवर्सिटी में राइट बिफोर 2 सेमेस्टर्स बिफोर आई वाज अबाउट टू गेट अ डिग्री मैंने छोड़ दिया. बिकॉज आई हैड अ चॉइस, आइदर मैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर लूँ या मैं जॉब कर लूँ, क्योंकि मैं दोनों साथ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 9 to 5 यूनिवर्सिटी, 6 to 4 जॉब थी, और उसके बाद अपनी भी एक छोटी सी दुकान चल रही थी. अपनी दुकान क्या चल रही थी? So I was freelancing, right? So from 2009 to 11, I was freelancing, and I was making about $10,000-12,000 a month, and I was satisfied with that job. But जॉब मैं इसलिए कर रहा था, जॉब मुझे इसलिए करनी थी क्योंकि जॉब में मुझे ऑन ग्राउंड एक्सपोजर, लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द पीयर्स. फिर एक मेरे मेंटोर थे सनाउल्लाह, तो उमर भाई एक और थे, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था. तो मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहता था, इवन दो दे वर जस्ट पेइंग मी 35-40,000 रुपीज़, एक्चुअली 25,000 रुपीज़ अ मंथ, बट कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था जो मैं अपनी फ्रीलांसिंग करियर में इम्प्लीमेंट कर रहा था और अच्छा हो रहा था. बट देन 2011 आई डिसाइडेड कि यार अब बस हो गया, खुद काम नहीं करना, चिल करना है, लोग हायर करेंगे, एंड इफ़ आई कैन मेक $10,000 अ मंथ, तो मैं अगर 50 बंदे रख लूँगा तो मैं $50,000 बना लूँगा. बट खैर ऐसा हुआ नहीं, कंपनी खुल गई, सब कुछ सही हो गया. आई स्टिल मेकिंग अबाउट $15,000 to $20,000 a month, or maybe $25,000 a month back in 2011 with the entire team of 10 or 12 people. और एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, करते करते करते, but eventually we did hit the benchmark of $55,000 to $75,000 in 2014. And until 2016 we were doing very well, until I purchased my own house and invested anything and everything that I had in that house. That was a turning point for me. फिर उस वक्त इंडस्ट्री भी चेंज हो रही थी, AI was relatively very new, but different automation tools भी आ रहे थे. तो that was also challenging in the sense के human based services का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना वो कम तो नहीं हो रहा था, बट डिमांड उतनी ही थी, बट द टूल्स दैट वर कमिंग इन उनको अडेप्ट करना चैलेंज था हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, अंडरस्टैंड करना. एंड आई वाज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग द हाउस, रिकंस्ट्रक्टिंग द हाउस, ट्राइंग टू मैनेज द फाइनेंशियल साइड, तो मेरा भी फोकस थोड़ा सा हट गया था. बट देन इवेंचुअली साल गुजर गया, 2017 में, 16 के एंड 17 में वी रीब्रांडेड अंडर न्यू नेम कॉल्ड क्लाउड लीड, एंड आई डिड नॉट हैव मनी, सो आई वेंट आउट टू डिफरेंट पीपल इन माई नेटवर्क. मैंने बोला यार देखो मुझे स्ट्रेस है, मुझे ये है, इतना बड़ा समंदर है, इंटरनेट इज अ सी, there's a lot of water out there, Yeah. and I can't drink it all by myself. I need people. So if you help me right now, because I don't have money to pay you when it comes to salaries, मैं तुमको जो है 5% stake दे देता हूँ कंपनी And में. who are these people? Okay, that's a very good question. So I kept an eye on my people in my family and my friends network. ये सारे मेरे cousins, distant relatives और close friends हैं जिनकी वो पास 5% ओनरशिप है कंपनी की, और बढ़ती गई है, कुछ लोगों की बढ़ती गई है. एंड दैट वाज 2017, एंड दैट वाज द सेम ईयर व्हेन आई आल्सो हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन. आई वाज डायग्नोस्ड विद पैनिक डिसऑर्डर, एंड दैट वाज द सेम ईयर व्हेन आई यूज्ड टू स्लीप आउटसाइड साउथ सिटी हॉस्पिटल के, यार अभी कुछ होगा, पैनिक अटैक होगा, विच सीम्ड लाइक अ हार्ट अटैक. तो मैं बोला मैं अंदर चला जाऊँगा, बच जाऊँगा, मस्त हो जाऊँगा. Delusional, but yeah. And तो मैं वो सारे स्ट्रेसेस जितने भी थे ना, उनका अमालगमेशन हो कि मुझे जो है ना पैनिक डिसऑर्डर हो गया, विच इज़ वाई आई वॉन्टेड 5 पीपल इन माई कंपनी हु कुड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो रिस्क फैक्टर डिवाइड हो जाए, स्ट्रेस डिवाइड हो जाए, और मैं थोड़ा सा एट पीस आ जाऊँ. इट वर्कड आउट वेरी वेल, बट फाइनेंशियली अगेन इट वाज इन दैट गुड, क्योंकि पैसे मैं सारे घर में लगा चुका था और नेक टू नेक चल रहे थे हम लोग, ब्रेक इवन पे थे. बट I invested heavily on the content and brand marketing side, where I had this vision that I want to create a brand out of cloud lead. That क्योंकि होता ही है कि when we sell something,
on the internet. तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना वो इंटरनेट फिल अप करता है. Right. So by 2019 we had decent recognition on the internet, and I also had appeared in multiple trade shows and pitch competitions भी startup के गया था, तो वो सब भी हो चुका था. So it worked out well. And by 2020, in 2018 I was in San Francisco. I was just at this bar called Tempest. The month was October. It was about 2:30 a.m. in the morning on a good Saturday night. I met this guy, Topo Network, एक sales network है अमेरिका में, San Francisco में. I met this guy. He was a sales ops manager. He was completely drunk, knocked out. So my colleague went to him and I told him that what we do. He's the founder of Cloud Lead, and we are into the sales space, sales automation space, and we help companies from the US do this, blah blah blah. The guy jumped off his seat. He's like, I know you guys. You have a team. You are based out of Pakistan. Blah blah blah. बोला फेंक रहा है साला. वो इतना नशे में है कि उसको क्या पता होगा कौन है. उसने मेरा पूरा शजरा निकाल के बता दिया. No way. That's when I got the idea कि हाँ अब हमारा brand recognition strong हो गया, इतना strong हो गया कि at least a guy who's completely drunk, knocked out, knows us. So that was a validation. So no, that's a very good validation. It's a very good validation. I mean, a guy who's an influencer knew us. I did not know him. My colleague did know him. He was in touch with him, but ठीक है. तो वहाँ से शुरू हुआ. फिर पता चला कि यार ये भी है. फिर 2020 में कोविड आया, एंड 2018 के एंड में हमने अपनी सेल्स प्लेबुक बनाई. वी स्टार्टेड रीचिंग आउट प्रॉस्पेक्ट. व्हाट वी आर डूइंग फॉर अदर पीपल, अदर कंपनीज, वी स्टार्टेड डूइंग फॉर आवर ओन सेल्व्स. एंड 2018 में जब हमने पाइपलाइन बनाई उसमें हमने डिफरेंट कस्टमर्स डाल दिए, डिफरेंट इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर्स डाल दिए, जिनसे हमारी बीच में पार्टनरशिप हो गई. तो we were in talking terms in 2019. I still remember we were talking to, I think, PayPal. And 2020 के end में जाके PayPal, it took about 18 months almost for us to close PayPal. तो इस तरह से फिर हमने जब वो activity शुरू की, then slowly and gradually by 2021 we acquired SAP as a customer. And by the end of 2021 only we also had a customer. We also acquired FedEx as a customer. और उसके बाद वो सिलसिला चलता गया. So if I can may ask, what services did you start providing to PayPal? We provide, so PayPal and companies like FedEx, they're sitting on huge databases. They have a CRM system where they have maybe, let's say, if to give a number, more than 10 million accounts in their CRM system, companies that are dead accounts for them. By dead accounts I mean कि वो किसी और कंपनी के पास शिफ्ट हो चुके हैं. Okay. तो किसी को गया, साइन अप किया, थोड़ा पैसे डाले, ट्रांजैक्शन करी, हो सकता है नहीं भी करी. And they're not satisfied with FedEx, they move to DHL. Okay. Right? So what we do is we help them identify कि यार ये कस्टमर आपके 10, hypothetically speaking, 10 million में से हमें 1 million की लिस्ट दें. सिर्फ कंपनी अकाउंट नेम्स and the point of contact who was working with you. We go out there, we do some research, we try to find out why did they switch from FedEx to DHL or whatever the service. Or in 90% cases, when we started doing the research and surveys on behalf of FedEx, we identified that it was an after-sales service or customer service issue, which led for the customer to move on to another logistics provider. Yeah, shipment delays का एक problem था. Not to from China to the US. और तीसरा प्रॉब्लम ये था कि dedicated account managers नहीं थे. Really small companies who were shipping out from China and Hong Kong region, Alibaba, AliExpress कहते हो. So those are the main areas, and we help them design a strategy that sort of help them regain those customers. उसमें ये था कि आप वो 3 महीने की जो है फ्री लॉजिस्टिक्स देंगे उनको, फ्री सर्विस देंगे, फ्री शिपमेंट, और उसमें डिपेंडिंग अपॉन द पार्सल साइज, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स इन्वॉल्व्ड, वो उसका टर्न अराउंड टाइम देंगे. और एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर होगा
who will be available 24/7 for the vendor to connect with in case of anything goes wrong. So हम basically sales automation, sales research, sales automation और marketing automation कर रहे हैं इन सारे customers के लिए using data. How many customers do you have right now? We have somewhere close to 50, between 50 and 100 customers right now. Okay. Awesome. No, that's very true कि हम लोग अपनी data side को even right now being in the technology age, especially looking at कि जी ज़्यादातर आजकल पाकिस्तान में टेक टैलेंट जहाँ पे जा रहा है, चलो वो अपनी कोई एजेंसी खोल लेता है, कुछ कर लेता है. They never, even us as a company, we never took our data so seriously. And why our customer leaves us? If we've had 9,000 customers till now and we have maybe 300 active customers, why did that 8,700 customers leave us? And then where did they go? What ticket size were they? How can we regain them? Because that's our biggest asset, right? If someone's buying us, that's the biggest asset that they're buying and they're going to be looking after once they do come into the firm. So हम लोगों ने तो सबसे बड़ी गलती करी. And then I really don't want to. This is actually today हमारी ऑफिस मीटिंग चल रही थी only a few hours ago and we were talking about the same thing. Okay, how we can actually pull up our data and try to market accordingly and then really sort out why someone left, where someone left, how someone left, and then tackle that problem accordingly. So how many contacts do you have in your CRM system right now? So I'm sorry, वो कौन से region से हैं? पाकिस्तान या बाहर से? We have 0 Pakistani customers. Okay. Maybe like 0.5%. Okay. मतलब पाकिस्तानी कंपनीज नहीं होती ना, वो तो बाहर से उनको बाहर निकाल के बाहर वालों को कितने होंगे? 5,000, 7,000? More. Okay, let's give it a number. Maybe let's say 10,000. अभी क्योंकि I can't really disclose anything, so let's just put in hypothetical numbers, right? Okay, so 10,000 है, सही है. ठीक है. उनमें से active paying customers कौन से हैं? 10,000 people in our CRM. तो हमारे पास अभी active users जैसे से 300 है. 300 हैं. And 10,000 में से 300, 500 भी निकाल दो तो 9,500 जो हैं वो dead accounts हैं, basically gone accounts हैं, lost opportunities हैं. Yes. Okay. So number one thing that I would suggest you to do is एक का सारे उन लोगों का डेटा एक्सेल फाइल में कंपाइल करो और एनालिसिस करो उस डेटा का कि उसमें कौन सी इंडस्ट्री से, कौन सी लोकेशन से, किस टाइप की कंपनी से ज़्यादातर लोग आ रहे हैं और डिसीजन मेकर कौन है. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग साइड का हेड है, सेल्स हेड ऑफ सेल्स है या हेड ऑफ आईटी है, कौन लोग हैं या सीईओज हैं जो तुमसे परचेस कर रहे हैं. तो अपना आइडियल कस्टमर प्रोफाइल डिफाइन करो पहले तो उस डेटा को मैप आउट करते हुए. द सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू गो बैक एंड यू हैव टू हैव अ टीम हु आस्क दीज गाइज आइदर बाय ईमेल और फोन कि व्हाई डिड यू स्टॉप यूजिंग आवर सर्विस और प्रोडक्ट व्हाटएवर इट इज. And okay, what if they've actually been approached by our sales guy? Yeah. But that wasn't really the best sales guy to really approach them. So is it fine that we approach them again? You could re-approach them. Okay. Re-approach them. Bad impression हमारी गई हुई है तो भी. कोई बात नहीं. Okay. Apologize करो. It's never too late to say sorry. Yeah. And it's never too late to mend your ways. माफ़ी मांगो फिर जाओ. किसी एक बंदे की ड्यूटी लगा दो कि वो लिंक्डइन पे तुम एज अ कंपनी ओनर तुम्हारे प्रोफाइल से उसको रीच आउट करें, अपोलोजाइज करें, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग. वंस दैट इज डन यू एंड साइमल्टेनियसली तुम अपना आइडियल कस्टमर प्रोफाइल डिफाइन कर रहे हो तो उसी तरह का और भी डेटा निकालते रहो, राइट. और जो नया डेटा निकलेगा उसको तुम एक अलग इंजन में डालोगे जो सेल्स ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में डालोगे पहले, जहाँ से तुम सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस अपनी क्रिएट करोगे भेज के कि दिस इज व्हाट यू आर, दिस इज व्हाट यू डू. And how does that happen? Email marketing. बस. Yeah. Facebook पोस्ट हम लोग रोज के पोस्ट डाल रहे हैं, वो भी डालते तो रहे ना. वो डालते रहो बट फेसबुक का टू बी ऑनेस्ट लिंक्डइन यस बट पोस्ट इतना चलता नहीं है. ईमेल या डायरेक्ट लिंक्डइन मैसेज और मे बी अ वॉइस मेल डायरेक्टली टू द एंड यूजर इज समथिंग दैट वर्क्स. नो मैटर, जब मेरा आज भी कनाडा का नंबर है वो मेरा फ़ोन बंद रहता है बट रोज़ रात में जाके मैं वॉइस मेल चेक करता हूँ कि किसने क्या भेजा है. So leave a voicemail and if you can sort of जो sweet spot है जाने जो companies genuinely बहुत अच्छी हैं and you believe that you can help them, उनको खुद कॉल करो, उनके decision maker से बात करो,
try to get their direct phone numbers from different sources. Mobile phone numbers. वो तो ideally. नंबर हमारे नंबर के काम है. Yeah, so mobile phone numbers. Send them a voicemail. Send them a speak to them. Different times पे call करो, connect करो. तो जिस दिन तुम्हारा मैकेनिज्म बन जाएगा ना दोनों तरफ से, जहाँ तुम ऑटोमेशन में एक तरफ मार्केटिंग की ऑटोमेशन कर रहे हो और सेल्स में तुम डायरेक्ट प्रिसाइज ब्रेविटी कंटेंट भेज रहे हो कि यार माय नेम इज़ साद, आई एम वर्किंग फॉर दिस इज माय कंपनी, दिस इज व्हाट आई डू, आई सी दैट यू हैव एन ओपनिंग फॉर दिस एंड दिस थिंग via indeed.com. Would you be open to connect with me on maybe let's say 28th of January next year, 2024? And then you run the same content to all these contacts when you're physically traveling to those parts as well. So you can continuously generate meetings for your own self, sending out the emails. Okay, अब थोड़ा सा मैं सवाल जो अगला पूछूंगा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ऐसा सच नहीं है, बट थोड़ा सा बायस या थोड़ा बुरा क्वेश्चन समझा जाता है. बट generally talking, when I was I even started remote staffing business just now, and when right before my father pulled me back into his work again this time along, and what I was mainly focusing on was कि जी मैं खूबसूरत लड़कियों को रखूं जो सेल्स का काम करें. Does that really matter though? It does. क्योंकि अगेन एक इंसान की फितरत है, अगर एक औरत भी होगी, औरत CEO भी है, तो शी विल बी मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू अ फीमेल. सेम थिंग विद अ मेल. बट अभी रियलिटी तो यही है ना कि मेजॉरिटी अभी आवाम जो सी लेवल पोजीशन पे है दुनिया में वो मेल डोमिनेटेड है. Well, yeah, it's male dominated in any and every part of the world, to be honest. And तो उसको एक खूबसूरत लड़की अप्रोच करेगी तो शी विल बी मोर इंक्लाइंड टू आंसर रादर देन मी. I know I'm खूबसूरत लेकिन very खूबसूरत, but again I'll give you an example. हमारा एक 10 साल पुराना client is a very nice guy. He's been working with us for 10 years, 12 years, and we met him. He's from Minnesota and Dallas. Account manager लड़की है यहाँ पे पाकिस्तान में, एक नहीं दो नहीं तीन लड़कियाँ हैं और उनके साथ 3-4 लड़के काम कर रहे हैं. वो किसी भी लड़के की कभी तारीफ करता ही नहीं है. He's always like, this guy is Umar. He doesn't know how to speak in English. This guy, he's dumb. He doesn't know how to think. और लड़की गलत भी करेगी ना, he's always like, oh, that's okay. I'll cover it for you. So I think, yes, it does leave an impression. It does leave an impact when it comes to gender-based roles. I think customer success to some extent, आफ्टर सेल सर्विस, यहाँ के वो रोल्स हैं कि जहाँ पे लड़कियाँ जो है ना ज़्यादा ईजीली कन्विंस कर सकती हैं. बट हार्डकोर सेल्स आई थिंक उसमें लड़के ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो परसिस्टेंट होते हैं. मे बी नॉट, बट अब तो दोनों ही हो रहे हैं. बट गो साइडवेज. आई थिंक 50-50 होना चाहिए हर कंपनी में. 100%. आई डेफिनेटली एग्री कि जी जितने अगर सेल्स में सिर्फ लड़के रखे हैं तो आई थिंक दैट्स रॉन्ग एज वेल. लड़कियां भी होनी चाहिए बट उतने ही लड़के भी हो. बट इफ यू पर्सनली आस्क मी, आई वुड रादर हायर मोर गर्ल्स देन बॉयज, बिकॉज लड़कियों के नखरे कम होते हैं, छुट्टियां कम लेनी होती हैं और सिगरेट कम पीनी होती है. अरे सिगरेट ब्रेक्स, ओ माय गॉड. तो मैं लड़कियों को ज़्यादा प्रेफर करूंगा ओवर लड़कास. इवन यू सिगरेट ब्रेक? आई डोंट टेक अ ब्रेक. आई स्मोक व्हेरेवर आई कैन, सो आई डोंट टेक अ ब्रेक. मैं तो अभी भी यहाँ भी पी लूंगा, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है. यहाँ अलाउड नहीं है. बट लिखा हुआ कहीं नहीं है यार. साइन लगा दें प्लीज कि नो स्मोकिंग इनसाइड द पॉडकास्ट रूम. शाहजेब परेशान हो रहा है. Okay, coming back to the podcast, amazing talks. Let's talk more about what we're doing right now. Okay, तो चलो वो तो सब तो हो गया. You have been living in Pakistan. You shared the journey about leaving Pakistan, and for some reasons, this country pulled you back. Okay. Or the people in this country pulled you back. But where do you see this country going? And what kind of opportunities do you see a lot of people having with our main resources being the smartphone penetration in Pakistan, being more than 150 million smart users, individual users. तो smartphones हमारे ज़्यादा हैं. हमारे पास इंटरनेट हर जगह. बल्कि हमारे पास जो अभी वरियाम आया था ना कल चाय सर्व करने, उसके गांव में वो कहते हैं सर वोल्टी हो गया.
VOLTE, voice over LTE. Oh, So what the telcos did was, वो कह रहे कि सर व्हाट्सएप नहीं चल रहा, यहाँ वोल्टी आ गया है, तब सिर्फ बटन वाला फ़ोन नहीं चलेगा, सिर्फ टच फ़ोन चलेगा. wow. So what happened was all these telcos stopped giving out 2G and they only have 4G. 4G or 5G. So what's going to happen now is they have to migrate to a smartphone. They don't have a choice They don't anymore. have a choice. So that's the best thing that could have happened. तो टेक्नोलॉजी किस तरह अपनी तरफ खींच रही है वो भी है. हर एक को फ़ोन तो चाहिए ना, तो वो एक चीज़ आ रही है. अब नाउ हाउ डू वी एक्चुअली, क्योंकि हमारे देखें 150 मिलियन लोग हैं, हर एक के पास व्हाट्सएप है, हर एक के पास वो एनी वाला सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है कि वो इस्तेमाल कर सके, ChatGPT का ऑप्शन है कि वो इस्तेमाल कर सके. नाउ विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली विद देम यूजिंग इन द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि एक और साल लगेगा, मगर उसके बाद लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली AI सॉफ्टवेयर ये सब इस्तेमाल कर लेंगे. Where do you see it going? Look, the first question that you asked, कि पाकिस्तान में क्या opportunities हैं? I think there are a lot of opportunities in Pakistan. Number one, by and large हमारे पास youth बहुत ज़्यादा है. But one of the major challenges that I see is कि उन youth को motivational factor नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में. You know, I remember when I was coming back in August from Canada, तो मैं न्यूज़ चैनल खोलता था, मुझे लगता था वाकई में यार कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, आज गए तो आज तो लुट ही जाएंगे. एंड इट्स बिन अ गुड 37 years फॉर मी. मैं पूरे 37 सालों में एक ही दफ़ा कराची में लुटा हूँ बस. मेरा zero है. I've never faced anything. I feel more safe in Karachi than I used to feel in San Francisco, to be honest. ऐसे मैं डाउनटाउन में अपने दोस्त के पास रहता, क्या तो बाहर नहीं जाना, 11 बजे के बाद लुट कर आओगे. लुट के आओगे वाकई में. मेरे साथ ये हो चुका है सैन फ्रांसिस्को में. So I don't know why. मैं पालो आल्टो, द सेफेस्ट सिटी इन अमेरिका, वहाँ मेरा बैग छिना है. वाओ. मार्क ज़करबर्ग के घर भी वहीं भाई डाउनटाउन में, द नेक्स्ट स्ट्रीट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन. वाओ. दैट्स द फनीएस्ट थिंग, उस अगली स्ट्रीट. तो हम लोग जो एक विशियस सर्कल है ना, वे मे बी अ कपल ऑफ पीपल सिट टुगेदर एंड लाइक यार कुछ भी नहीं है कराची में, पाकिस्तान में जाएं, बाहर जाएं, ये करें, गेट आउट ऑफ द कंट्री, ब्ला ब्ला ब्ला. वो जो नेगेटिविटी है ना, उसका स्पाइरल इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है, डोमिनो इफेक्ट, के हर तीसरा बंदा उससे अफेक्ट हो जाता है. और पॉजिटिव लोग बहुत कम है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी भी पॉजिटिव एनर्जी कभी कभी अंदर ऐसे चली जाती है. व्हेन आई सिट डाउन इन माय फैमिली एंड और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, आई एम लाइक, वो रोते ही रहते हैं, को सब कुछ है होने के बाद भी रोते रहते हैं. तो होता क्या है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना, या जो अच्छे टैलेंटेड ब्रेन्स हैं जिनको उन अपॉर्चुनिटीज़ पे कैपिटलाइज करना भी है, दे बाउंड टू थिंक, दे गेट नेगेटिव अबाउट द गवर्नमेंट, अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, या इन्वायरमेंट, या बिजनेस एथिक, जो भी है वो नेगेटिव हो जाते हैं. तो आई थिंक स्पिरिट्स जो है ना, वो मोरल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है इस वजह से. तो वी नीड टू चेंज दैट कल्चर. वी नीड टू इंटीग्रेट पॉजिटिविटी इन आवर ओन लाइफ्स. इश्यूज़ हैं, हर जगह होते हैं, कहाँ नहीं है. मुझे आप दुनिया का कोई सबसे बड़ा शहर बता देना, इशू ना हो. अरे छोटे शहर बता दें, बंदे के अंदर इशू होते हैं. तो इतना 2.5-3-4 करोड़ की आबादी वाला शहर है, इश्यूज़ होंगे, बट साइमल्टेनियसली अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं. नाउ कमिंग बैक टू द अपॉर्चुनिटीज़, यस, लेट्स पॉइंट देम आउट. लेट्स पॉइंट देम आउट, तो क्योंकि हमारे लोग यार, विद एवरीथिंग बीइंग इन फ्रंट ऑफ अस, वी स्टिल डोंट डू इट. See, that's all a mindset. Silicon Valley is a mindset, right? It's not a place. You can create a Silicon Valley right here in this room with the right kind of people. It's a mindset. होता क्या है कि हमारे यहाँ जब बंदा, लड़का या लड़की ग्रेजुएट हो जाता है, he or she thinks कि यार आज मैंने ये प्रोडक्ट बनाना है, ये मेरा आइडिया है, that's the best idea, this is what I'm going to work on, and I'll go to the incubator, नेस्ट आयो या कैटलिस्ट लैब्स है, या कहीं भी चले गए, और NIC, एंड विल रेज मनी. अखबार में नाम आ जाएगा, न्यूज़ आउटलेट्स में कहीं भी फेमस हो गए और पैसा आना शुरू हो जाएगा. हम लोग ये सोचते हैं कि यार $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज कर लेंगे. 2 मिलियन इज 60 करोड़ रुपये. 60 करोड़ में मैं पहले तो लैंड क्रूजर लूँगा, फिर मैं उम्रा करूँगा. अरे भाई, वो आपके पैसे थोड़ी हैं. आपके पैसे थोड़ी हैं.
और उसके बाद भी चैलेंजेस आते हैं, पोस्ट इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस होते हैं. तो कमिंग बैक टू द सेम थिंग, तो बाय प्रोडक्ट, हम सबसे पहले जो बाय प्रोडक्ट, एक्सेलेंस का बाय प्रोडक्ट होता है पैसा, नॉलेज, ब्ला ब्ला ब्ला, हम उसको सबसे पहले ले आते हैं. और जो हमें करना होता है, वी नीड टू प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. हमें जिस चीज़ के ऊपर प्रोडक्ट बना के प्रैक्टिस, एक्सेलेंट चीज़, एक्सेलेंस हासिल करना है, हम उसको साइड में रख देते हैं. सो आई थिंक द माइंड सेट इज़ वेरी इनकरेक्ट. वी नीड टू चेंज दैट. दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. वी नीड टू एजुकेट आवर पीपल के यार आप जो भी करो, देयर इज़ नो सच थिंग एज फेलियर. इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. You have to start and start small from anywhere. Whatever you want to do, if you believe in it, validate the idea and do it. And be persistent. Do not quit until you're 110% sure कि इसकी मार्केट अभी तक डेवलप हुई नहीं है. और डेवलप नहीं भी हुई है तो आप डेवलप कर सकते हैं. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू हैव दैट लेवल ऑफ परसिस्टेंस एंड पैशन फॉर दैट प्रोडक्ट जो यहाँ मिसिंग है. I'll give you an example. मैं जानता हूँ एक लड़के को जिसका पैशन ही था बाहर जाना है. Did not have money. Visa refused to different countries. But he wanted to get out of this country. बंदे ने 4 साल इतना स्ट्रगल किया. Eventually he landed in Germany on a student visa. अपनी fully funded state funded program में गया. Scholarship भी मिला, स्टाइपेंड भी मिल रहा था. He did get out of this country. 4 साल उसने बहुत मेहनत की. ये परसिस्टेंस था. उसको जो चाहिए था वो मिल गया. और जब हम honestly speaking, when we really want something really bad, really badly, तो पूरा यूनिवर्स मिल जाता है कि यार इसको करना है. As long as you're honest with your commitment, passion and genuinely want to help the people. जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका ये होना चाहिए कि यार it's going to help people on the other side and on this side it's going to help create jobs and blah blah blah. तो वो माइंडसेट शिफ्ट नहीं होगा ना जब तक, तो ग्रोथ नहीं आएगी. लोगों के पास वो नहीं आएगा. दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाई वी आर रॉन्ग. तो कल्चर, माइंडसेट, कल्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एजुकेशन, अवेयरनेस आएगी तो चीज़ें अलाइन हो जाएंगी. माइंडसेट वाली बात जो है वो बहुत एक्यूरेट है. अच्छा, मुझे एक चीज़ जो लोगों का होता है कि अभी भी मैंने अपने सवाल में ये पूछा कि जी पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में क्या है. We're global citizens now. You travel the world all the time. I'm 6 months outside the country. Yeah. How do we actually believe that we're global citizens and that leaving the country isn't bad? I mean, too many people in the country anyways. So if we leave the country, you know that more than me, Pakistan, Karachi में अगले साल सिर्फ 2023 में जो ऑफिशियल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से लगाया जाए तो 9 लाख लोग ऐड हो रहे हैं. 9 लाख बच्चे ऐड हो रहे हैं सिर्फ. जो लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं वो नहीं. तो 9 लाख बच्चों को तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्रिएट कर नहीं रहे. और ना इतना तो हम कैसे कर सकते हैं. तो या तो हम रिमोट जॉब, मतलब बाहर की जॉब्स लें यहाँ पे, या तो बाहर जाएं एंड लिव गुड लाइफ्स. आई मीन यू आर डूइंग बिजनेस अब्रॉड एंड दैट्स the best thing you could have done if you were doing the business of Pakistan. आपने बताया भी था कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स थे और उन्होंने पैसे भी नहीं दिए. यहाँ पे challenges तो हैं. That was the first time, but again, लेकिन वो हाई टिकट क्लाइंट्स तो फिर भी यहाँ पे मुश्किल से ही मिलेंगे ना, या गिनती के मिल जाएंगे. Okay, I agree with you on that note, but मैंने पूरा बिजनेस यहीं से बनाया है. हाई टिकट क्लाइंट्स भी यहीं से सिक्योर किए हैं जो नॉर्थ अमेरिकन. हाँ, ये नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ पाकिस्तानी क्लाइंट्स नहीं है ना वो, लेकिन यहाँ बैठ के, बट यहीं से बैठ के मैंने दिए ना. मेरे अब्बा 25 साल से रिमोट बिजनेस चला ही रहे ना. उनको तो 16 साल तक अमेरिका का वीज़ा नहीं मिला था. So his business, everything was in America. He wouldn't get a visa. He got rejected 20 times visa. 21st time मिला. 21st time मिल गया. उन्होंने अपने नाम में अल्लाह लगा लिया, अल्लाह वाला लगा लिया ऑफिशियली. तो अल्लाह का नाम लेते ही काम हो गया. वेरी नाइस. तो बरकत आ गई. But how can we actually believe that we're global citizens? And if we really do want to leave the country, go explore, of course it's good to explore the world. How can we really believe in it? क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि जी दुबई जाना बहुत मुश्किल है, जर्मनी जाके घूम के आना बहुत मुश्किल है, पैसे होने ज़रूरी है. पैसे के बगैर भी तो बहुत सी चीज़ हो जाती हैं. यार पहले तो घूमना है तो अपने मुल्क में घूमो ना सबसे पहले. अभी कल बताऊँ, कल आपसे पहले याद है मैंने बोला था पॉडकास्ट करने एक बंदा आया था. वो बंदा इस्लामाबाद से निकला था, नहीं बल्कि मानसेरा से निकला था. मानसेरा से ना यहाँ पे पहुँचा था कितने 2 महीने में, बगैर पैसे के.
he asked everyone कि मैं फ्री में रह लूँ, मैं फ्री में खाना खिला दो, हिचहाइक करते हुए आया in Pakistan and it's phenomenal. इसीलिए मैंने कहा चल भाई पॉडकास्ट पे आओ, because you want to capture that. I mean, it's phenomenal what he did. So I know this guy. He's still in Pakistan. His name is Valentine. He's from Austria. वो all the way ऑस्ट्रिया से हिच हाइक करते हुए पाकिस्तान में आया हुआ है. अच्छा, जो आए हुए थे हिच हाइक करके आए. हिच हाइक करके आया है. कहाँ है अभी? अभी आई थिंक वो जाफराबाद सिंध में कहीं आ गया. मतलब way too many opportunities. देखो जिंदगी का एक फलसफा है ना, there is no such thing as happiness and sadness. Happiness एक इमोशन है sadness की तरह, जिसका पीक कभी यूँ आएगा और फिर यूँ हो जाएगा. There's always a stagnant line like this. उसे inner peace कहते हैं. वो आपको 10 रुपए में भी मिल सकती है और वो आपको 1000 रुपए में भी मिल सकती है. बट जो हैप्पीनेस का बूस्ट हमारे यहाँ चाहते हैं ना, शॉर्टकट में कि यार हमारे पास पैसा आ जाए, हम ये भी कर लें, हम यहाँ भी चले जाएं. आई थिंक देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट फ्रॉम योर ओन कंट्री. यहाँ भी बहुत डाइवर्स कल्चर है. आप गिलगित चले जाएँ, अलग डिफरेंट लोग मिलेंगे. आप लाहौर चले जाएँ, अलग कल्चर है. लाहौर पंजाब के अंदर ही अलग कल्चर है. आप इंटीरियर सिंध चले जाएँ, अलग कल्चर है. एक्सप्लोर द सिटीज़ दैट यू ऑलरेडी हैव इन पाकिस्तान. सीखना है ना मकसद, सीख तो आप कैसे भी सकते हैं. Once you have that kind of an exposure in hand, number one, you travel not to, I mean, if you ask me right now, when I was young, I traveled for all the wrong reasons. When I started traveling alone, solo travel, that was the only time when I realized that it's a self-discovery trip. And that also happened in Pakistan, by the way. अमेरिका या यूरोप में नहीं हुआ. एंड ऑल यू नीड इज यू एंड योर सेल्फ. जस्ट गो एनीवेयर, फाइंड योर ओन सेल्फ, फाइंड आउट who you are, what do you want from life, where do you see yourself in the next 5-10 years. Human brains evolve every 10 years and we are a far more superior version of an AI chatbot as humans. तो सीखने के लिए तो कोई उम्र कम नहीं है, और सीखने वाले के लिए कोई टूल्स कम नहीं है. छोटा मोटा खिलौना हमारे पास पड़ा हुआ है. वी कैन लर्न अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एज लॉन्ग एज वी यूज इट पॉजिटिवली. राइट. तो आई थिंक बाहर जाना ज़रूरी नहीं है. आप यहाँ से भी सीख सकते हैं. यहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं बाय द वे. यहाँ तो बहुत ही अच्छे लोग हैं. अब आप भी थोड़े आप हैं, काफ़ी नहीं. अच्छा, थैंक यू. So before finishing off, I want to ask कि पॉडकास्ट की क्या अच्छी बातें कह रहे थे आप? पॉडकास्ट की क्या अच्छी तारीफ़ें कर रहे थे जाकर, कोई इम्प्रूवमेंट्स का आप सजेस्ट कर रहे थे? यार आई थिंक पॉडकास्ट शुड ऑलवेज बी ऑन अ लाइटर नोट. आई मीन थोड़ा ग्लैमर हो, लाइटर नोट पे हो, और हंसते हंसाते पूरी बात कर दो, और जिसमें ज़िंदगी का भी एलिमेंट हो. बिकॉज विदाउट लाइफ देयर इज नो बिजनेस, without life there's no podcast, without life there are no listeners. Right. So you have to add a element where we also talk about life और हमारे physical, mental, emotional challenges क्या हैं पूरे journey में, so people can connect with you at a personal level instead of just focusing on कि यार इसने ये कर लिया. Business लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक वो तुम्हें नहीं समझेंगे. It's very important for people to understand you as a person first, to be able to understand what you're doing. फिर उनका इंटरेस्ट खुद ही डेवलप होगा. तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा था कि थोड़ा लाइटर नोट पे कैजुअल कन्वर्सेशन होना चाहिए. Was this casual? It was nice, very nice. The only thing I did not like is that you're not allowed to smoke in this room. इसको ओपन एयर कर दो. बस वो आप अगली बार आएंगे ना तो हम ओपन एयर छत पे अलग से करेंगे. So again, now we're ending the podcast. Is there anything that you want to say, or like a message that you'd like to share, because you were mentioning really strongly about mental health yesterday? Yes. I think I meet a lot of people in Pakistan. Karachi में lately मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना शुरू किया. I meet about on an average 20 to 40 people every day. और even रोड पे जाते हुए, ख़ासतौर पे रमज़ान में जब मैं देखता हूँ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं. There's a mental health crisis in Pakistan. 75% of the people I feel, statistically मैं feel नहीं कर रहा हूँ, actually ये report है. 75 to 85% people of Pakistan are depressed. और
mental health is one of those things that leads to a lot of different disease, maybe cardiovascular disease, early deaths, blood pressure, hypertension जैसे कहते हैं, डायबिटीज़, यंग लोगों में भी आ रहा है. और ये एक टैबू सब्जेक्ट है. पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. पीपल आर शाय फ्रॉम टेकिंग अ ट्रिप टू द साइकियाट्रिस्ट ऑफिस या थेरेपिस्ट के पास जाने से, बिकॉज दे थिंक वो पागल नहीं है. और एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन ये पागलपन की निशानी नहीं है. पागलपन की निशानियाँ और होती हैं. पागलपन में समथिंग एल्स, स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर, एक्सट्रीम बाइपोलर डिसऑर्डर, टाइप 2 बाइपोलर डिसऑर्डर जो होते हैं वो डिफरेंट होता है. एंग्जाइटी इज समथिंग दैट मे बी लेट्स से वेयर एंड टेयर हो जाता है ब्रेन का. आफ्टर थिंकिंग वे टू मच विदाउट फाइंडिंग द आंसर्स, यू गेट लॉस्ट इन द मेज दैट्स अप देयर. So to solve it, you need help. कभी कभी दवाई जो है ना वो आपको हेल्प कर देती है. I would rather take a medication and improve the quality of my life on a daily basis than be a mess up there and pretend to be happy. And the biggest challenge, biggest problem that I see is कि एक बंदा अगर मैं अंदर से खुश ही नहीं हूँ या satisfied ही नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें भी खुशी कभी भी नहीं दे सकता. मैं यहाँ से निकलूँगा ना तो मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत बात करूँगा या इनके बारे में कोई गलत बात कर दूँगा या मैं किसी और को खुश होते हुए देख नहीं सकूँगा. तो वो एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुका है पाकिस्तान में इस वक्त. सो आई थिंक उसको हमें कर्ब करना चाहिए. वी शुड इनकरेज पीपल टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड इनकरेज देम टू रीच आउट फॉर हेल्प. आई रियली एग्री कि हम लोग अपने इमोशंस को और अपनी बातों को, अपने ओवरऑल फीलिंग्स को बहुत सप्रेस करते हैं. एंड देन so many tools out there that you can stay anonymous and really help your mental peace. चले, thank you so much for your time again. कहाँ ले जा रहा हूँ मतलब? हमने बोला ना चलें, तो मैंने बोला कहाँ ले जा रहे हैं आप? अभी आप इसके बारे बताते हैं. Thank you so much for coming. You're welcome. It was a great conversation. If anyone wants to reach out regarding ओवरऑल सेल्स से रिलेटेड कि जी ऑटोमेशन किस तरह करें, क्या करें, आपके कोई ट्यूटोरियल्स हैं या आपसे रीच आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक प्ले बुक है जो हम जनरली यूज़ करते हैं. आई कैन शेयर दैट प्ले बुक विद एनीवन एंड एवरीवन who's selling to any company that's selling to customers in North America or European region. I can share it at no charge. बेहतरीन. चले, thank you so much for coming. Ping him on LinkedIn if you have any questions. Don't spam him. You can spam me. I don't mind. Spam him. And जो लोग LinkedIn पे मुझे मैसेज कर रहे हैं अपना मंजन बेचने के लिए, प्लीज़ इनको मैसेज करें, मुझे मुझे आते रहते हैं. Thank you so much for your time again. And then I hope to keep on seeing you. We're going to Future Fest soon, so meet us at Future Fest if possible. And और लोग भी आए. बहुत अच्छी वो है कॉन्फ्रेंस. आप गए इसमें पहले? नहीं, मैं पहले नहीं गया. I look forward to going to Future Fest this time. आर्जिश आके चला गया कराची, उससे मुलाकात नहीं हुई ना, वो मिलने के लिए आया भी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना. उसने बोला मैं होपिंग टू सी हिम इन लाहौर. Definitely. इंशाल्लाह. Thank you. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.